Hello everyone, this is Mahima Neja back with your exes today. No, not your actual exes, but the words that start with X. Alright, so today I am going to give you three words starting with X and going to be very beneficial for you. Alright, so the first word that I toss is excruciating. Excruciating basically means a thing that is very intensely painful, when you are feeling very painful. ऑलराइट, तो अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो टेक द वर्ड क्रूशियल फ्रॉम दिस. क्रूशियल मीन्स जब हमें पेन होता है तो हमें लगता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही है, हम ही क्रूशियल है यहाँ पे सब लोगों के लिए, सब लोग मुझे देखो. सो एक्सक्रूशिएटिंग, क्रूशियल, आई एम क्रूशियल फॉर एवरी वन, सो आई एम इन इंटेंस पेन. ऐसे आप याद कर सकते हो. बाकी यू कैन मेक अप योर ओन स्टोरी. ऑलराइट, सो कैन आई गिव यू अ सेंटेंस फॉर दैट? ओके, सो I was in excruciating pain after my accident, but now I feel better. Okay, the second X word is exasperating. Exasperating का meaning होता है very irritating, very frustrating. तो इसको आप याद कैसे करोगे? Exasperate, which resembles to ex desperate. तो जब हमारे ex desperate हो जाते हैं तो बहुत irritating हो जाते हैं, हमें बार बार फ़ोन करते हैं, they are desperate to talk with us, so it's very irritating and frustrating for us, right? So let's make a sentence with it. All right. So yeah, I find my little sibling too exasperating, but I still have to take care of him. Okay. Okay, the third word is exuberant. Exuberant का मतलब होता है the people who are very cheerful, full of energy, एकदम high energetic people होते हैं, those are called exuberant. अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम लोग बहुत एनर्जी में होते हैं, बहुत एकदम अच्छे मूड में होते हैं, चेयरफुल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, नॉनसेंस बोलने लग जाते हैं, ब्लैबर करने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी, राइट? You would feel me. All right, so rant, exuberant, which means very happy, cheerful, full of energy, एकदम energetic वाला. तो sentence, I find Ranveer Singh quite exuberant. I really do. Alright, so these were the words for today. I hope you are using all my words and they are helping you. If you have any suggestions, please comment below my video and like, subscribe and share, and stay tuned for the next video. Thank you.